So good afternoon all of you. So welcome back. Hope you all are fine, doing well. How many are there? 10 students. Okay. Still students are joining, so 2 minutes we will wait. Okay? Fine, very good. Have you all read the textbook? I am also fine, Lakshmi. I am also fine. So textbook, how many of you have read the textbook? And how many of you have inspired by after hearing the story of Ramabai, Rukaya Begum, Rukaya Shekhawat, then Rasundari Devi? How many of you have inspired? कितने जन आप लोग इंस्पायर हुए हो जब मैंने आप लोग ने पढ़ा ये तीनों विमेंस के स्टोरी आपने पढ़ा कि कितने डिफ़िकल्ट उन्होंने कितना लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स दे हैव डन ओके एंड देन ओनली दे सक्सेस बिकॉज इन द medieval time period in the 18th century we can say that the women's are not they were not allowed to read and write. Okay, so one, yes, I, everybody, okay, fine, very good, okay, fine. Good afternoon, Shardul, Prathamesh. So now we will see, so now we have already finished about that learning, okay, learning for change. Then we have go through the women change, because the lesson is women changes the world, the fewer opportunities we had. Then afterwards we have go through the many stories, okay, like 3 women stories. Then learning for change in that girl, the engine driver, she become the Lakshmi Lakra, about Lakshmi Lakra. So after all this thing, now we will see the women's movement. Okay, now we will talk about the women's movement. Okay children, now today's topic is, our subtopic is women's movement. Now women and girls, okay, women and girls, both women's and girls. So why they started actually that improvement in a situation, okay, why they had done, just they want to improvement, okay. So individually, then collectively, everybody, they struggle to bring about this change, because our topic is women change the world. To change all this thing, okay, to change, or they want the improvement, the situation, all this thing. So women individually they tried, collectively they tried, they have struggled a lot, just because they want the change, okay, they want the change, okay. So how, what they have done to for this change? So in this case we will see that participation is observed in that women's movement. We can see that participation. So participation is observed all over the country, okay, not only in one, all over the country. Participation means everyone, they participated in this struggle because they want the change, okay. And in that case, many men also, in that case, many men supported the women's struggle as well. Not only women nahi kiya, men also, many men also support, okay, many men also support women's movement as well. बहुत सारे men ने भी इस movement में help किया. Now all this happened usually using different strategies,
उन्होंने ये जो मूवमेंट व्हेन दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट, सो इस मूवमेंट को सक्सेस करने के लिए, ओके, फॉर दैट दे मेड मेनी स्ट्रैटेजीज, है ना. So all this happened by using different strategies. Now we will discuss about the strategies. Now कौन से strategies उन्होंने used किया था. ये जो different strategies have been used to spread, क्यों किया ये strategies? Just to awareness, to spread awareness, then fight discrimination and seek justice. उन्होंने discrimination के against में fight किया. क्यों किया? They want justice. Okay, they want justice. Okay, so now we will discuss about all these strategies. उन्होंने जो different strategies use किए, now we will discuss about the strategies. Now many strategies, first like campaigning, then raising awareness, then protesting, then showing solidarity. Okay, ये सारे उनके strategies थे. अब now one by one we will discuss about all these strategies, isn't it? Now first we will discuss about the strategies. Okay, ma'am, now also even it is common to go to the school, but some girls in village don't go to school. They learn their household work and then marriage done in small cases. This is bad. Yes, so this is all, that's why I am saying that this is because you people are the future of our country. Okay, so why we are teaching this, why these topics are included in curriculum, just to aware you. ओके, आपको ये अवेयरनेस के थ्रू में ये जस्ट ये पढ़ा रहे, इसीलिए ताकि आप अवेयर हो जाओ. आप अगर देखते हो ऐसा कोई तो आप अपोज करो, आप बोलो कि ये, बिकॉज सी नाउ सिटीज, इफ वी विल विजिट सिटीज, सो ऑल दिस थिंग इट इज़ नॉट देयर, बट स्टिल इन फ्यू स्टेट, I am not talking about all, few states, in village, in a rural area, this thing is there. Okay, so this will also slowly, this will also change. Now first we will discuss about the campaigning. Now campaigning, this word is not new for you, because in our school, whenever the school election is having, so what we used to see that the students, those who are standing for a house captain or a head boy or head girls, what they used to do, they are preparing their slogans and all this thing, and they are every class they are going and they are appealing you to vote them. तो this is only known as a campaigning. Okay, इसी को बोला जाता है campaigning, isn't it? Now campaigns became an important part to fight against discrimination and violence. So the first strategies is campaigning, and that campaign became an important part to fight against. ये एक important part हो गया to fight against discrimination and violence. दोनों के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए उन्होंने कैंपेनिंग किया. ओके, नाउ विथ इट्स हेल्प न्यू लॉज वर बीइंग फॉर्मुलेटेड. अभी बिकॉज ऑफ दिस, ये जो उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, किसके अगेंस्ट में फाइट किया उन्होंने? अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट वायलेंस. सो अ लॉ वॉज मेड. सो अंडरलाइन all of you underline this one. So a law made, okay, so this part you underline, all of you highlight this part. A law was made in a 2006 to give women who face a physical and mental violence within their home, also we can call as a domestic violence, some legal protection. अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, एंड व्हेन इट पास्ड, फॉर्मुलेटेड, आई सेड ना, with its help new law
were being formulated, government they started a new law against discrimination and violence. Okay, so in the year 2006. Okay, clear? So in 2006, law against domestic violence, we can say law against domestic violence. Then in 1997, Supreme Court to formulate guidelines to protect women against sexual harassment. Then again Supreme Court in 1997, okay, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मुलेट किया एक गाइडलाइंस, किसके अगेंस्ट में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में, एट वेयर एट वर्क प्लेस एंड विद इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट दे स्टार्टेड अ गाइडलाइंस. And in school also we used to, when you will go higher class है पॉक्सो, सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो एक वो हुआ है उसके अगेंस्ट चिल्ड्रन के उसमें कि चिल्ड्रन जो है पॉक्सो एक लॉ उन्होंने पास किया था कि 2012 आई थिंक कि 2012 में पॉक्सो एक्ट उसको बोला जाता है, पॉक्सो एक्ट कि चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है उसके अगेंस्ट में भी गवर्नमेंट ने एक लॉ वो स्टार्ट किया था. ठीक है. So in the 1980s, for example, women groups across the country spoke out against a dowry debt. Now it is not there, but in the 80s, 1980s के time period में ऐसा every day we can able to see the headlines. Most of the time this headline was there. Dowries के लिए मारा गया है ना, डाउरी के लिए लड़की को जला दिया, काट दिया, मार दिया, टॉर्चर. सो ये तो एकदम कॉमन हो गया था डाउरी डेथ. सो इन 80s टाइम पीरियड. ओके, सो केसेस अगेंस्ट अ ब्राइड बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड बिकॉज ऑफ डाउरी, ये एक था 80s टाइम पीरियड में. Okay, so women groups spoke out against the failure to bring these cases to a justice. तो कोई मतलब जस्टिस नहीं मिलता था, तो उसके अगेंस्ट में भी वुमेन ने जो है रैली या जो भी है उन्होंने ये स्टार्ट किया. So they did so by coming on to the street, approaching the courts and by sharing information. So eventually this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek a dowry. इतना ज़्यादा actually वो हो गया था. Then women they themselves actually they started they coming out. उन्होंने बाहर निकल के they make a group और फिर उन्होंने रैली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कोर्ट के अगेंस्ट में उन्होंने सब रैली किया, अप्रोच किया कि ये एक मतलब क्योंकि होने के बाद भी गाइडलाइंस फॉर्म होने के बाद भी जो है कंटिन्यूस, क्योंकि कोई पनिशमेंट नहीं था ना उसमें, गाइडलाइंस ही हुआ था, कोई जस्टिस मतलब उनको कोई पनिशमेंट तो नहीं हो रहा था. तो वो मारपीट, वो ग्रीडी लोग जो होते हैं वो तो कंटिन्यू कर रहे थे अपना काम. फिर वुमेन सोचा कि नहीं इसके लिए कुछ करना है, फिर उन्होंने ये स्टार्ट किया कि जो डाउरी लेंगे उनको पनिश करना है. तो फिर ये लॉज जो है वो चेंज हुआ टू पनिश फैमिली हु सीक अ डाउरी. फिर उनके अगेंस्ट में भी जो है पनिशमेंट के लिए एक लॉ फिर स्टार्ट हुआ. आप देख सकते हो ये जो एक इमेज दिया है, एक्चुअली क्या है कि सत्यानारायणी, एन एक्टिव मेंबर ऑफ वुमेन्स मूवमेंट सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन्होंने कितना स्ट्रगल किया सोचो. इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेयर्स में बैठी रहती थी. बाय अ लीगल फाइल गैदरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लॉन्ग लीगल बैटल टू सीक जस्टिस फॉर हर डॉटर हु वॉज मर्डर्ड फॉर द डाउरी, कि जब तक उसको जस्टिस नहीं मिला तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे स्टेयर में कंटिन्यूस बैठी रहती थी, जब तक कि लोगों को जो इन-लॉज थे उसके डॉटर के फैमिली, जो हस्बैंड के फैमिलीज़ के थे, उन्होंने उसको मार दिया था.
उनको जब तक पनिशमेंट नहीं मिला तब तक वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में ये स्ट्रगल भी उन्होंने किया था. ओके, नाउ कैंपेनिंग ओवर, नाउ वी विल सी द रेजिंग अवेयरनेस. नाउ अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज टू डू in our school, we used to do, we are making posters, okay, slogans, and then we have to take out the rallies, और हम जगह जगह जाके वो रैली करना, नुक्कड़ नाटक करना, स्ट्रीट प्लेस करना, सॉन्ग, पब्लिक, ये सारा चीज़ जो है ये क्या हो गया? अवेयरनेस. तभी जाके तो लोग जागरूक हो गए. जागरूक करना, दिस इज ऑनली नोन एज ए, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर ये समझाना कि दिस इज रॉन्ग, है ना. सो दिस इज ऑनली नोन एज ए रेजिंग अवेयरनेस. सो एन इम्पॉर्टेंट वुमेन्स मूवमेंट वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इश्यूज. एग्जाम्पल, तो उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने स्ट्रीट प्लेस किया, उन्होंने सेमिनार किया, उन्होंने टीवी शोज़ में जाके उन्होंने लोगों को अवेयर किया, दैन पोस्टर्स, दैन सॉन्ग, ये सारे चीज़ जो है उन्होंने किया. हम बोल सकते दिस आर द डिफरेंट एजेंट्स. ओके, इसके थ्रू उन्होंने अवेयरनेस रेज्ड किया, ओके, अगेंस्ट वुमेन्स फ्रीडम के लिए, वुमेन्स मूवमेंट के लिए. ओके, ये तो देखो, ये दिस इमेज इज नोन एज अ स्ट्रीट प्ले. नुक्कड़ नाटक भी हम बोलते हैं इसको, और स्ट्रीट प्ले भी हम इसको बोलते हैं. दिस इज द पोस्टर वी यूज टू डू इन आवर स्कूल, वी यूज टू डू, है ना. 2 साल से कोविड पेंडेमिक के कारण ये सब नहीं हो रहा, बट आप सोचो आपने कितने बार जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस तरह के रैलीज किए हैं अवेयरनेस के लिए, सेव वाटर के लिए, देन HIV के लिए, बहुत सारे इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम लोग ने ये सब किया है. देन प्रोटेस्टिंग, देन द नेक्स्ट वन इज प्रोटेस्टिंग. प्रोटेस्टिंग ये भी हम बोल सकते हैं रेजिंग वॉइस, अपना वॉइस रेज करना. रेजिंग वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, or we can say when a law or policies act against their interest. This is only known as a protesting. protest करना किसी के अगेंस्ट में. So वो किस तरह से कर सकते हैं हम? How we can do this? By public rallies, by demonstration, है ना. हम रैलीज निकाल सकते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि दिस इमेज यू कैन सी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रैली निकाल के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आज भी आप न्यूज़ चैनल अगर आप खोलोगे तो आपको ये टाइप के प्रोटेस्ट जो है आपको हमेशा दिखेगा. नाउ ऑल्सो, ओके. नाउ द लास्ट वन इज दैट इज द शोइंग सॉलिडारिटी. नाउ शोइंग सॉलिडारिटी, solidarity means what? Solidarity means we can say a union, or we can say unity or agreement of a feeling. okay, एकजुट होना. हम एक वन वर्ड अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं एकजुट होना. तो ये वुमेन्स मूवमेंट के लिए जब तक सारे वुमेन्स एकजुट नहीं हो जाएंगे, वो अपना सॉलिडरिटी शो नहीं कर सकते, तब तक उनको सक्सेस नहीं होगा. सो दिस इज़ द लास्ट, that is the showing solidarity. So the women's movement is also about showing solidarity with the other women and causes. ये जो वो कर रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकालते हैं. अक्सर आप देखते होंगे कोई ऐसा हो जाता है तो किसी के साथ कुछ केसेस आ जाते हैं तो कैंडल मार्च निकालते हैं सारे वुमेन्स, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, उन लोग ये रैलीज वगैरह निकालते हैं. तो दिस इज़ ओनली नोन एज अ शोइंग सॉलिडारिटी. सो देन on 8th March, that's why on 8th March, International Women Day, all over the world come together to celebrate and renew their struggles. And afterwards they declared, है ना, afterwards ये declare किया गया है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोला गया. जब सारे वुमेन्स ने ये स्टार्ट किया, वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उनको बहुत सारे सक्सेस भी हुए. एंड देन दे गॉट दिस 8th March इंटरनेशनल वुमेन्स डे declared. Why?
because the world women come together to celebrate and renew their struggles. जो उनके ये struggles जो है वो continue रहे. They can raise their voice any time. ठीक है, कभी भी अपना वॉइस वो रेज कर सकते हैं जब भी उनके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस और एनी अदर प्लेस, एट होम और एनीवेयर, दे कैन रेज देयर, दे कैन प्रोटेस्ट, दे कैन रेज. ओके, तो उसके लिए ये सारे स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ किया था. ओके, सो आई थिंक हियर वी फिनिश. See here given that women are holding up a candles to demonstrate the solidarity. Means union, unity, okay, showing their solidarity, unity between the people of India and Pakistan. Every year on 14th August, this is also very important, so all of you highlight this program, this part. So every year on 14th August, several thousand people gather at a Wagah border. You know very well, those who have visited, many of you have visited that place. Okay, so every year 14th August, several thousand people gather at Wagah border on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. ऐसे भी वो every day वो एक प्रोग्राम होता है वहाँ पर, ठीक है, जो बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का होता है. एक गेट्स होते हैं, गेट दोनों, उस तरफ पाकिस्तान के रहते हैं, इस तरफ इंडियन वो रहते हैं. तो वो इवनिंग को अपना फ्लैग जो लोग फ्लर करते हैं उसको किस तरह से नीचे उतार कर अनफोल्ड करना, वो एक इवनिंग होता है, प्रोग्राम होता है. बट 14th अगस्त को जो है ये एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है. ओके, दैट इज़ इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड Pakistan. Okay, so here we finish our women changes the world. Okay, this lesson we have finished. Tomorrow I will share you the question answers and quiz also. Quiz also I will give you. Second thing, and tomorrow we will start new lesson, that is Delhi Sultanate. ओके, नया लेसन हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत. टू मच लेट, सो नाउ आई विल शेयर यू द लिंक. ओके, सो ऑल ऑफ यू सबमिट योर अटेंडेंस फास्ट. Submit your attendance. All of you submit your attendance. जल्दी से अपना अटेंडेंस सबमिट कर दो, देन ओनली यू कैन लीव. If you have done, then I can end the session. So thank you all of you. Have a nice day.